everyone, today we are here with Shweta Gaur, renowned celebrity makeup artist and bridal makeup expert. We often get a lot of queries from our brides-to-be that there are just 2 months left to my wedding. How should I take care of my skin? What should I do? So we are here to sort out all your such problems. So let's hear it from the expert. Hi people, wedding season is the most important season, and for the bride especially it's a very big day. So I have seen most of the brides panic also, and they start like, oh my god, my wedding is in 2-3 months, so what do I do? So my recommendation to the brides for today is that for at least 4 to 5 months back you should start your wedding preparation when it comes to your skin regime, your health regime, your diet, because it is really important that all these things should have a good mix match together. Then only the final product with our makeup looks absolutely wonderful. So I think most of the ladies are looking forward to know how will their makeup look on their big day, how will they look, how will her dress look, how will her jewelry look. So it's very important that you synchronize all these things together. Your skin regime is very important, your dress selection is very important, your diet is very important, your jewelry selection is very important. Then only when we put all these things together, it comes out to be a beautiful product. So I will really tell all the brides of today that we should start our health regime, our skin regime at least 5 to 6 months prior, so that we can have a better of results. Like I think most of the people are going through a lot of stress in their life when it comes to their corporate jobs, when it comes to their entrepreneur programs, when it comes to their like whatever jobs they are involved in. So we have a lot of stressful life, we have a lot of pollution that is hitting our skin. So we have prior aging only. आज की डेट में 24 to 25 year old girls only, they feel उनके under eyes आ गए हैं, fine lines आ गए हैं, laughing lines आ गए हैं, and they really want to get rid of all these things. So ये सब चीज़ें कैसे हम दूर कर सकते हैं, ये बहुत important है आपके लिए जानना. पहले तो जब आपको पता चले आपकी शादी फिक्स हो गई है, so kindly go for your face treatments, which is very important. Earlier there was an era जब लोग facials कराते थे और लोगों को लगता था हाँ मेरा face थोड़ा clean हो गया, it's looking beautiful and ये मेरे लिए एक enough होगा. But आज की डेट में facial is no more in. More in is the treatments. You basically need a permanent solutions to your problem, not a temporary solution. आज भले ही आप वेडिंग पे अपना मेकअप करा लेंगे, बट व्हेन यू गो फॉर योर हनीमून एंड व्हेनेवर दोस डिनर्स, इंपॉर्टेंट डिनर्स आपके जो वेडिंग्स के बाद आते हैं, तो उस टाइम पे आप थोड़े कॉन्शियस हो जाओगे. आप चाहोगे मैं थोड़ा नेचुरल लगूँ. तो वो नेचुरल ब्यूटी कैसे आएगी? जब हम आपको उस चीज़ के लिए ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड करेंगे. सो आई रियली सजेस्ट यू गो फॉर स्किन ट्रीटमेंट प्रोग्राम रैदर देन फेशियल्स. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, टेक केयर ऑफ योर डाइट, टेक केयर ऑफ योर न्यूट्रिशन रेजिम, क्योंकि न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए. आप जैसा खाएंगे वैसा आपका फेस दिखेगा. तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप अच्छा एक डाइट काउंसलिंग लीजिए, गो फॉर लिटिल एक्सरसाइज प्रोग्राम, गो फॉर एज आई ऑलरेडी मेंशन्ड यू स्किन ट्रीटमेंट्स आप कराइए. एंड बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एक रेजिम ज़रूर फॉलो करिए, दैट इज़ योर क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, CTM, which I always recommend to everybody. एंड उसके बाद आप SPF लगाइए एक अच्छा 50 SPF. अगर आप डे टाइम में बाहर जा रहे हैं तो 50 SPF यूज़ करिए. और अगर आप एक एम्बियंस में बैठे हैं, जैसे अपने घर पे बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, देन यू कैन यूज़ अ 30 SPF एंड फॉलो दिस रेजिम एवरी 6 hours. तो जैसे आप कल को BB क्रीम भी लगाती हैं, थोड़ा मेकअप भी पुट ऑन करती हैं, तो आपको ये चीज़ मेक श्योर करनी जरूरी है एट होम बिफोर गोइंग ऑफ टू योर स्लीप फॉर योर ब्यूटी स्लीप. आप ये ज़रूर इंश्योर करिए कि आपने अपना सारा फेस का मेकअप जो भी आपने लगाया था दिन भर वो अच्छे से क्लेंस कर लीजिए. अगेन यू नीड टू टोन योर फेस, अगेन यू नीड टू गिव इट अ नाइस रिफ्रेशिंग टोनिंग, एंड देन यू नीड टू मॉइस्चराइज और गिव इट अ नाइट टोनिंग. सो ये पूरा जिस्ट जब हम डालेंगे तो ऑफकोर्स योर ब्यूटी विल बी रिटेन. बट अभी तक जो छोटे मोटे डैमेजेस हो चुके होते हैं उसके लिए गो फॉर द स्किन ट्रीटमेंट्स. इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट. अगर आप एक अच्छा स्किन ट्रीटमेंट फॉलो करते हैं आपका मेकअप बहुत अच्छा लगेगा. आप कई बार अपने दोस्तों की शादियों में गए होंगे या रिलेटिव्स वेडिंग में गए होंगे जहाँ आपने कई बार देखा होगा कि नई लाफिंग लाइन्स बन रही है, अंडर आइज बन रहे हैं, लाइन्स डिपॉजिट हो रही है. वो कब होती है? जब आपका स्किन इम्परफेक्टेड होता है, जब आपके स्किन के अंदर डिप्रेशन होता है तो आपका मेकअप भी डिपॉजिटेड हो जाता है. तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप अपने फाइन लाइंस का रिमूवल कराइए शादी से पहले. स्किन में एक अच्छा स्ट्रेच होना चाहिए, अच्छा ग्लो होना चाहिए, उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट्स लीजिए एंड देन यू सी द रिजल्ट. जब उसके ऊपर जब मेकअप होगा, बिकॉज फॉर मेकअप वी रिक्वायर अ क्लियर वॉल टू हैपन.
जब तक आपका स्किन क्लियर नहीं होगा तब तक आपका मेकअप भी सुंदर नहीं लग सकता. सो बहुत इंपॉर्टेंट है आप इन सब चीज़ों पे फोकस करिए. स्किन ट्रीटमेंट्स, then your diet, go for good amount of coconut water, have good amount of fruits. जब आपको मालूम है आपकी शादी हो गई, I know shopping is a stress. आप शॉपिंग करते हैं, रिलेटिव्स के लिए बहुत कुछ खरीदते हैं, अपने लिए बहुत कुछ खरीदते हैं, पर उस चीज़ में हम गलत चीज़ों में भी इंडल्ज हो जाते हैं. वी गो आउटसाइड एंड वी जंक ऑन, वी स्टार्ट ईटिंग फास्ट फूड्स बिकॉज हम लोग टाइम पे तो खा नहीं रहे. वी शॉपिंग 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 बट वी ईटिंग हॉगिंग ऑन फास्ट फूड. सो इट्स बेटर यू कीप गुड अमाउंट ऑफ फ्रूट्स व्हेन यू गोइंग फॉर शॉपिंग. इंस्टेड ऑफ hopping for Coke, Pepsi or something, you can hop for naril pani, you can hop for some fresh juices, you can hop for even probiotic drinks also, which is very very healthy, very very nutritious. So opt for nutritious and nutrition option. कुछ आप अपने साथ walnuts and almonds carry कर सकते हो. If you're having a hunger strike, you can have that. तो ये अगर हम छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हमारे लिए चीज़ें बहुत बहुत बेटर निकल के आएंगी. Go for बॉडी मसाजेस, बॉडी स्पास, बॉडी रैप्स, क्योंकि हम हमेशा अपने फेस को तो पैम्पर करते हैं, बॉडी को कभी पैम्पर ही नहीं करते हैं. तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको हर चीज़, हर रेजीम का ध्यान रखना. जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ, जस्ट गो विद द फ्लो, एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेसेस. बट इफ यू डोंट टेक एडिक्वेट रेस्ट, you don't look nice, then everything goes for a loss. So my recommendation to all the brides for today will be follow your skin regime, take proper skin treatments, go for night nutrition diet, exercise, and no more stress in your life, because it is your very important and very big day which you really want to make it look very beautiful. So I hope all of you all the best. Take care. Bye bye. So we pretty much covered all your wedding related queries, from skincare to diet. And for more such wedding related updates, follow us on our social media. Do not forget to subscribe to our channel and share this video with all your friends and the brides to be. Thank you. Bye bye.